So good morning students. Today we are starting operations of sheet metal known as Morning, sir. embossing and coining. Good morning. Am I audible? आपको आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So embossing is one of the operations which is performed on sheet metal. Similarly, coining is another operation. Both operations look alike. That means those operations are look similar operations, but there is some difference in these two operations. So first of all, we consider the embossing operation. You might have seen these kind of designs on the sheet metal placed on the floor of the bus or train. Whenever we travel by bus or train, we have seen this kind of design on the sheet metal, which was used to make floor of the bus or train. Actually, these kind of designs or these patterns are made by operations known as embossing. Okay. In this figure, I will try to make you understand the principle of embossing. The die used or tool used in this case is a set of die and a punch. The die is having some sort of engravings or projections on it, and the corresponding projections or depressions are made on the punch, which is used for embossing purpose. Okay, and this operation is used for making raised figures known as projections on one side of the sheet and corresponding depressions on other side of the sheet. Okay, as it is written in the definition of this embossing, the operation is used for making raised figures which are known as projections. You can see some kind of projections on these two sheets. Similarly, a projection is being made in this figure, two-dimensional figure which is seen here. But if you look back the back side of the sheet, then you will find that the sheet is having corresponding depressions on other side. It is evident from this figure. You can see initially this was a sheet metal blank, brown color sheet metal blank, which was placed on top of the die. Punch descends and it applies force for the deformation of the sheet. Here you can see the shape of the die and punch used for embossing purpose. The die is having some type of cavity in it, and the punch which is used for performing embossing operation is having corresponding projections. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा ये कैविटी यहाँ पे डाई में बनी हुई है, ठीक उसी प्रकार का प्रोजेक्शंस ठीक पंच में बना होता है, ठीक है ना? And when punch descends to perform embossing operation, the clearance between these two, जब पंच नीचे आता है और जो मैक्सिमम जितना नीचे आ सकता है उसके आने के बाद डाई और पंच के बीच का जो क्लियरेंस होता है, दैट क्लियरेंस इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द शीट मेटल यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग embossing operation. Okay, so the die set consists of a die and punch with desired contours. Contours mean this shape. If this sheet is having a projection of this side, then the punch will have corresponding depressions on its lower surface. On the other end, if die is having this type of depression or cavity on its top surface, then the punch will have corresponding projections on its bottom face. And when punch descends, the clearance between the die and the punch is same as that of the sheet thickness. This is very, very important. Okay. Embossing operation is used for providing dimples on sheet to improve its rigidity. It is not visible here. I would like to make it clear. Embossing operation is for providing dimples on sheet to increase rigidity of the sheet. This is the very important aspect which was used here for making these kind of patterns by embossing on the sheet metal, which was used for making be used on the floor of the either train or bus. तो ये जो यहाँ पे आपको प्रोजेक्शंस ये देख रहे हैं, जो डिजाइन देख रही है, ये डेकोरेटिव तो है, डेकोरेटिव होने के साथ साथ ये सिर्फ इसलिए बनाई गई है यहाँ पे जिससे कि सीट की रिजिडिटी या स्ट्रेंथ उसकी इम्प्रूव हो सके.
So in industrial applications, the embossing is performed to improve the rigidity of the sheet metal. Sometimes you might have seen the decorative pieces which are hanged on our wall drawing rooms. So apart from the changing of sheet rigidity, it is used for forming decorative item also. आपने देखा होगा गणेश जी या शंकर भगवान है कोई दूसरी का दूसरी कोई डेकोरेटिव आइटम जो कि शीट मेटल से बनाए गए होते हैं, वो उन डेकोरेटिव आइटम्स को बनाने के लिए हम एम्बॉसिंग का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जो डाई सेट है वो डाई और पंच होता है, ये लोअर डाई कहलाती है, अपर डाई कैन आल्सो बी नोन एज अपर डाई। बट यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, दो चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है कि जैसा कंटूर डाई का होगा, इफ डाई इज हैविंग कैविटी देन द पंच विल हैव करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन। यदि डाई के यहाँ पे प्रोजेक्शन है तो जो पंच होगा उसमें करस्पॉन्डिंग डिप्रेशन हो गए, कैविटी वहां पे होगी। नंबर वन। नंबर टू, when this punch moves in downward direction, maximum downward possible downward direction, तो कुछ समय आने के बाद रुक जाएगा। उस केस में यहाँ पे जो क्लियरेंस रहेगा, दिस क्लियरेंस विल बी इक्वल टू थिकनेस ऑफ द शीट मेटल। यदि शीट मेटल की थिकनेस 5 mm है तो डाई और पंच के बीच का क्लियरेंस जब पंच मैक्सिमम ट्रेवल कर चुका होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो कितना होगा, कुल 5 mm होगा या शीट मेटल की थिकनेस के बराबर होगा। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो आता है वो ये आता है, यू कैन सी इन दिस फिगर दिस मच पोर्शन ऑफ द सीट, दो तीन जगह आप देख सकते हो, दिस मच पोर्शन प्लस दिस मच पोर्शन प्लस दिस मच पोर्शन ऑफ द सीट इज नॉट अंडरगोइंग एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन। इन पोर्शन में सीट का यहाँ पे डिफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है। जो डिफॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे और यहाँ पे होता हुआ आपको दिख रहा हो। यहाँ पे जितना भी वॉल्यूम होगा इस एंटायर वॉल्यूम में, इस सीट मेटल पूरे के वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जितना भी वॉल्यूम है इस सीट मेटल का जहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें कंप्लीट बल्क में वहां पे डिफॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक है ना, नंबर वन। और इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे होती है कि दिस ऑपरेशन इज समवाट सिमिलर टू बेंडिंग ऑपरेशन। यहाँ पे सीट का कुछ पोर्शन बेंड भी हो रहा है। समटाइम्स ड्राइंग ऑपरेशन इज ऑल्सो, it is said that drawing operation can be performed in this way also. So embossing is considered as combination of two operations, drawing and bending. ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो एम्बॉसिंग के बारे में होते हैं। कंटूर ऑफ द सीट एंड कंटूर ऑफ द पंच, सॉरी कंटूर ऑफ द डाई एंड कंटूर ऑफ द पंच, क्लियरेंस बिटवीन डाई एंड पंच, एंड this much portion where contours are made in die and punch, only that much portion of the seat undergoes the deformation. ठीक है ना। मतलब वो एरिया जहाँ पे सीट और सॉरी पंच और डाई के बीच में कुछ कंटूर बने होते हैं, सिर्फ वहां पे डिफॉर्मेशन हो रहा होता है। बाकी की सीट मेटल में यहाँ पे कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा होता है। नंबर, ठीक है ना। एंड वाई वी परफॉर्म एम्बॉसिंग ऑपरेशन, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि इट इज डन टू इंक्रीज द रिजिडिटी ऑफ द शीट मेटल। यदि शीट मेटल ये स्ट्रेट पीस है तो हम इसको इजीली बेंड कर पाएंगे, ठीक है ना, उसको डिफॉर्मेशन करा पाएंगे। लेकिन एक बार यदि इसमें हम कोई पैटर्न टाइप के बना देते हैं उसमें डिफॉर्मेशन कराना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, या हम बोल सकते हैं कि जो सीट रहती है उसकी रिजिडिटी यहाँ पे इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा this sheet embossing operation is used for making decorative items by sheet metal also. तो ये इस पीपीटी में यदि आप इसको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप अनम्यूट करके अपने आप को पूछ सकते हो क्वेश्चन। नो क्वेश्चन, तो अपन आगे चलते हैं। As written in embossing, the thickness of the sheet remains uniform all over even after embossing has been done. This is very very important. यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जो डाई और पंच के बीच का जो क्लियरेंस है, दिस इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द शीट मेटल. So whether we measure thickness of the sheet at this place where no deformation has been occurred and at this place where deformation has been occurred by embossing operation, then you can find that the thickness of the sheet at all cross section all over the area remains the same. This is very very important.
ठीक है. On one side of the sheet is raised to have projections. It will have corresponding depressions on the other side. So this is also already clear here. यहाँ पे आपको शीट मेटल में प्रोजेक्शन दिख रहा होगा, लेकिन यदि हम शीट मेटल के पीछे की तरफ देखेंगे तो वहां पे करस्पॉन्डिंग डिफ्रैक्शन होता है, जो कि किसके द्वारा बनता है, एम्बोसिंग के द्वारा बनता है. The sheet is spread on the bottom die and the stroke of the punch is so adjusted that when it moves down to the lowest position, when this punch moves to the lowest position, in that case, it leaves a uniform clearance between the impressions carved in the punch and the die. ये impression जो हमने बनाए होते हैं, इनके बीच का जो clearance है, thickness रहती है, that is equal to the thickness of the sheet being embossed. ठीक है. You can remember then that when I taught you resistance welding process, in that case I taught you one type of process known as projection welding. Projection welding is type of resistance welding process. So in order to make projections on the sheet metal, I told you that embossing operation is done, and you can see that this type of figure was used for performing welding operation. So this figure is made, or this type of sheet is made by embossing operation. ये दूसरा फिगर है जिसमें आप देख सकते हो कि पंच के यहाँ पे काफी, इसमें इसी को बड़ा करके अपन ने यहाँ पे दिखा दिया है, जहाँ डाई के अंदर करस्पॉन्डिंग डिप्रेशन या कैविटीज हैं, और पंच के ऊपर जहाँ जहाँ डाई में कैविटी हैं वहाँ पे पंच के अंदर क्या है, प्रोजेक्शंस हैं. ठीक है. तो ये इसका एजेंशियल फीचर होता है. और दूसरा फीचर क्या होता है कि whatever is the thickness of the sheet at the start of before performing embossing operation, if you consider or if you measure the thickness of the sheet on this embossed component, you will find the same thickness. ये किस लिए पॉसिबल होता है? इसलिए पॉसिबल होता है कि पंच जब डाउनवर्ड मूव करता है तो फॉर एक्सट्रीम मूवमेंट के बाद पंच और डाई के बीच का जो गैप रहता है, क्लियरेंस रहता है, दैट इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द शीट. तो उस केस में the portion of the sheet which is undergoing deformation, it will have the same thickness all over. इसलिए हमको यहाँ पे same thickness मिलती है. So this is the description of the embossing process. यदि आपके यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया इन दो शीट में, स्लाइड्स में, then you can ask the question. सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देना. इसके आगे अपन चलते हैं. Second operation is coining. This operation is known as coining because this operation is primarily used for performing or making coins. ठीक है. Sometimes we can use make medals also. This operation is used for making coins and medals. That's why, because of the coin earlier it was used for making coins, that's why it is known as coining operation. This operation is similar to embossing, but there are some differences. The differences is that similar or different impressions are made on both sides of the sheet. Consider this figure. You can see two sides of a coin. This is head side and this is tail side. This figure is showing two sides of the same coin. Okay. So this coin was made from a sheet metal which was having certain thickness. After performing coining operation, you can see the impressions made on two sides of the sheet. The impressions on two sides of the sheet are entirely different. हेड में यहाँ पे आपको हेड बना हुआ है, यहाँ पे कुछ अलग लगा हुआ है. तो एम्बोसिंग में तो ये जरूरी होता है कि जैसा प्रोजेक्शन सीट में एक तरफ है वैसा ही करस्पॉन्डिंग डिप्रेशन सीट के पीछे होगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी. क्वाइनिंग में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. मोस्टली क्वाइनिंग ऑपरेशन में दोनों तरफ के जो प्रोजेक्शन या डिप्रेशन होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसा आप इस क्वाइंस में यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं. ठीक है. क्वाइनिंग इज स्क्वीजिंग ऑपरेशन इन विच मेटल फ्लोज प्लास्टिकली. यहाँ पे मेटल का फ्लो होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है. और कहाँ पे होता है? दिस डिफॉर्मेशन ऑफ द मेटल और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द मेटल अकर्स इन द कैविटी बिटवीन डाई एंड पंच.
अब आप ही बोलो कि यहाँ पे आप कैविटी बोला, तो कैविटी इसलिए बोला गया है कि यदि डाई में कैविटी है तो पंच में प्रोजेक्शन होगा, यदि डाई में प्रोजेक्शन है तो पंच में करस्पॉन्डिंग कैविटी होगी। तो मटेरियल का जो फ्लो होता है वो कैविटी के अंदर ही होता है। और वो कब कैविटी फॉर्म होती है? जब पंच अपना मैक्सिमम अमाउंट वहां पे मूव कर चुका हो। तो उस केस में जो पंच और डाई के बीच में गैप होता है दैट इज नोन एज कैविटी एंड दैट इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द शीट मेटल। ठीक है ना? सो यू कैन सी इन दिस फिगर, this is the shape of the punch and this is the shape of the die. A sheet metal blank having uniform thickness has been placed over top of the die. The punch applies the force for deformation of the sheet metal. Here you can see this is the figure uh, uh, which has been taken or it has been drawn after performing the coining operation. In this figure you can see that the thickness of the sheet metal at two ends is minimum, where it is maximum at these two portions. Okay, it is having different shapes also. So it is not necessary that the thickness of the sheet uh, on which coining operation has been performed will be having same thickness. Similarly, it will have different shapes also. And when this punch applies force for deformation, then plastic deformation or plastic flow of the metal occurs in certain areas. ठीक है ना? आप यहाँ पे देखो कि इस एरिया में एक्चुअली था ऐसा, ये सीट ऐसी थी, लेकिन जब पंच ने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो कैसी बन गई? यहाँ पे कुछ ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया है या थिकनेस आपको ज्यादा दिख रही, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है। ठीक है ना? तो पंच यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई करेगा वो स्क्वीजिंग टाइप या कंप्रेशन टाइप का होगा। इसके बाद में मेटल का फ्लो होगा और जो फ्लो होगा वो प्लास्टिक फ्लो होगा। किसके बीच में होगा? इन द कैविटी विच इज फॉर्म्ड बाय डाई एंड पंच। इट इज अ कोल्ड फोर्जिंग ऑपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड फोर्जिंग ऑपरेशन। फॉर परफॉर्मिंग फोर्जिंग ऑपरेशन, we place the heated metal blade onto the die and the punch descends. That means lower portion of the top portion of the die descends, which is fixed on the ram, and it applies force onto the material to be full. तो यहाँ पे जैसा फोर्जिंग वहां हो रहा होता है, सिमिलरली फोर्जिंग यहाँ भी हो रहा होता है। मेटल का यहाँ पे फ्लो है, लेकिन मेटल का फ्लो जो होता है वो टॉप लेयर्स में होता है और बॉटम लेयर्स में होता है, पूरे के पूरे वॉल्यूम में यहाँ पे नहीं होता है। कहीं कहीं पर टॉप लेयर में भी होगा और बॉटम लेयर में भी होगा। ओके, that's why it is written that it is a cold forging operation in which metal flow occurs in the top and bottom layers of the sheet only and not in entire volume. Okay, so this is the brief introduction about coining, and I told you that coining is used for making coins, medals and similar articles. Okay, operation seems similar to that of embossing, but there are certain differences. सबसे बड़ा डिफरेंस तो होता है कि यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि जो डाई है और पंच है उसमें सेम प्रकार के प्रोजेक्शन या डिफ्रैक्शन हों। इसका मतलब ये है कि डाई की शेप आपको यहाँ पे दिख रही है ऐसी, लेकिन जो पंच है उसकी शेप कुछ अलग है। इसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, वी आर एबल टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्रेशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द शीट। अब कॉइन से याद रखना कि कॉइन में अलग अलग प्रकार के इम्प्रेशंस दोनों तरफ होते हैं, और वो तभी पॉसिबल होता है जब डाई और पंच में अलग अलग प्रकार के इम्प्रेशंस बने हुए हों या उनका कंटूर अलग अलग हो। ठीक है ना? इसके अलावा यहाँ पे जो मेटल का फ्लो होता है प्लास्टिक फ्लो होता है, क्योंकि फोर्जिंग ऑपरेशन जैसा है, और उसमें जो फ्लो होता है मेटल का वो टॉप लेयर्स में और बॉटम लेयर्स ऑफ द शीट में होता है। इफ वी टॉक अबाउट embossing operation, then embossing is considered as mixture of drawing and बेंडिंग। वहां पे ड्राइंग भी हो रही होती है, बेंडिंग भी हो रही होती है, लेकिन जो ड्राइंग और बेंडिंग है वो कहीं पे लिमिटेड होती है, वो पूरी की पूरी सीट में नहीं होती, वो इन एरियाज में यहाँ पे लिमिटेड होती है। बट इफ वी कंसीडर दिस क्वाइनिंग ऑपरेशन, देन यू कैन फाइंड दैट मटेरियल डिफॉर्मेशन फ्लो अकर्स इन टॉप लेयर्स एंड इन बॉटम लेयर्स। ठीक है ना? यहाँ पे बल्क डिफॉर्मेशन टाइप का कुछ हो जाता है, लेकिन मोस्टली जो मेटल का फ्लो होता है
आउटपुट टॉप लेयर और बॉटम लेयर में होता है, बीच में मेटल एज इट यहाँ पे रहता है. So this is the brief introduction of coining operation. Now if you have any doubt you can ask. कहीं कोई डाउट हो एम्बोसिंग क्वाइनिंग के बारे में तो आप यहाँ पे अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज अपन आगे चलते हैं. सो नो क्वेश्चन. ओके. Now we have to consider the differences between embossing and coining operations. First difference, you can write the difference based on the definitions of the two. In embossing, we are going to make projections on one side of the sheet and corresponding depressions on other side of the sheet. But in coining, we can make different kind of impressions on both sides of the sheet. This is the basic definition of the embossing and coining. Okay. Now it is written operation. Operation means the embossing operation involves drawing and bending of the metal. We have studied drawing. By drawing, we make cup-shaped item. So whenever we are going to make some projections and depressions from the sheet, then obviously it is similar to perform a drawing operation. And bending means to bend the sheet. So bending is also done in this case. So it is considered, embossing is considered as performing a drawing and bending operation at a time. This coining operation is similar to cold forging. Now you know what is cold forging. So the cold forging operation means the operation performed below recrystallization temperature of the sheet metal. Okay. So operation of embossing and coining are different. Then what about clearance between die and punch? In case of embossing operation, it is necessary that gap or clearance between die and punch must be equal to the thickness of sheet metal. But in case of coining operation, the clearance may vary across the sheet area. That this is figure. This is evident from this figure. Here the clearance between die and punch is this much, and here it is minimum. That means it is varying across the length or across the complete area of the sheet which has undergone coining operation. So clearance may vary, but it is constant in case of embossing operation. One more difference is there, shape of the produced component. By embossing operation, the component will have projection and corresponding differentials on other side of the sheet. Whereas in case of coining operation, the components may have different type of projections. ये एक जैसे भी हो सकते हैं और ये अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो एम्बॉसिंग में होता है वो बेंडिंग और ड्राइंग ऑपरेशन होता है, यहाँ पे फोर्जिंग ऑपरेशन होता है, कॉइनिंग में फोर्जिंग ऑपरेशन होता है. Now we consider the metal flow. So flow in entire volume of sheet takes place in case of embossing operation. यदि हम embossing operation करा रहे हैं, ठीक है ना, तो जिस एरिया में प्रोजेक्शन या डिप्रेशन बनता है वहां पे मेटल का फ्लो होता है और ये माना जाता है कि उस कंप्लीट एरिया में वहां पे एंटर वॉल्यूम में मेटल का फ्लो हो रहा होगा. On the other hand, in case of coining operation, the flow of metal occurs in top and bottom layers of the sheet only. जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मेटल का जो फ्लो है वो कॉइन इस शीट के ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ भी बीच एंटायर वॉल्यूम में नहीं होता है. If we consider the applications of the embossing and coining operations, then you can see the differences in the applications also. Embossing is used for creating dimples on sheets and which is necessary for improving the rigidity. Similarly, embossing is also used for making decorative items of sheet metal. Okay? Coining operation is used for making coining. It was initially designed for making coins only. That's why this operation is known as coining. Nowadays, it is also used for making medals and other similar articles also. So this is the basic difference between embossing and coining. Here, I would like to make you clear one thing, that whenever a question of
comparison between two parameters like embossing coining comes in the examination, I suggest you to write answer in the tabular form, because in tabular form it gives clear idea to you as well as for evaluator also. So evaluator can have a quick glance over it and you can get good marks. So it is my suggestion that whenever a question of differences or comparison or distinguish between X, Y, Z comes, then you should write answer in tabular form only. So this is the basic difference about embossing and coining, basic introduction about coining and embossing. So this is from my side. If you are having any question, then you can unmute yourself and you can ask. आपको कोई क्वेश्चन पूछना तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, अदरवाइज फ्रॉम माय साइड। सर ये जो मेटल फ्लो होता है सर, ये कैसे मतलब इंटायर वॉल्यूम ऑफ द एरिया होता है एम्बॉसिंग में, उसमें ये समझ नहीं आया सर। देखो ये एम्बॉसिंग का फिगर है, चाहे आप इसको कंसीडर, ये दो प्रोडक्ट हमारे सामने दिख रहे हैं, तो मेटल का जो फ्लो हुआ होगा वो इस जगह पे, इन जगहों पे हुआ होगा, पूरी सीट में नहीं हुआ होगा। लेकिन जहां जहां मेटल ये एम्बॉसिंग किया जा रहा है उस पूरी जगह पे सीट मेटल का फ्लो होता है, कम से कम इस वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम में, ठीक है ना। यदि हम इसको कंसीडर करें तो इन सारी जगहों पे मेटल का फ्लो हुआ है, तो ये माना जाता है कि मेटल का जो फ्लो होता है वो एंटायर वॉल्यूम में होता है। कहाँ पे होता है? एम्बॉसिंग के अंदर। लेकिन यदि हम कॉइनिंग ऑपरेशन कंसीडर करते हैं तो इसमें जो मेटल का फ्लो हो रहा है, प्लास्टिक फ्लो हो रहा है, वो टॉप लेयर्स में हो रहा है और बॉटम लेयर्स में हो रहा है, और बीच की लेयर एज इट इज यहाँ पे पड़ी रहती है जिसके ऊपर कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ होता, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, yes, और कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है ना, तो यदि क्वेश्चन नहीं है तो अपन क्लास बंद करते हैं। यू राइट योर अटेंडेंस ऑन द चैट। सबने लिख दिया अटेंडेंस चैट बॉक्स में? यस सर। यस सर। मीटिंग बंद करें, अपनी क्लास बंद करें। यस सर। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।